लिटरेचर में हम देखते हैं कि शुरू से ही दो चीजें तो सामने आती रही. वन वाज क्रिएटिव वर्क, दैट इज कॉल्ड अ लिटरेरी टेक्स्ट. And other was its criticism or interpretation. यानी शुरू से दो चीजें सामने थी. एक तख्लीकी वर्क, तसनीफ, चाहे वो जुबानी हो, चाहे वो एक फर्द करे या एक पूरी कम्युनिटी करे, और दूसरा उसकी तशरीह व ताबीर था. सो टेक्स्ट and its interpretation or criticism that has been since primitive age. With the passage of time, literary text became more and more individual creative act, and we see different genres of literature and which are associated with particular authors. Like you can say Great Expectations is a novel by Charles Dickens. Hamlet is a play by William Shakespeare. Waiting for Godot is a play by Samuel Beckett. The Wasteland is a poem by T.S. Eliot. And we see tons of explanation, interpretation, and criticism, which not only explain the meaning, but also question the paradigm of meaning. Sometimes they work on sources of text, and also there are comparative studies. अब ये जो सारा काम है, that is based on research. So literary research has four kinds, you can say initially, which are bibliography and textual criticism, biographical research, third is theoretical study, and fourth is interpretive studies. इसके अलावा दो आजकल जो लिटरेरी रिसर्च है उसमें बहुत ही डोमिनेंट ट्रेंड्स हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूं. फर्स्ट वन इज oral narrative. Mean there is a working or there is a research on oral literature, particularly in context of African literature. There is focus on oral studies or oral narrative or oral literature. यानी आज का लिटरेचर में रिटन टेक्स्ट के साथ साथ जो ओरल वर्जन्स हैं उनको, जो कि अब रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद हैं हमारे पास, तो पुराने बुजुर्गों से वो पुरानी स्टोरीज जो हैं वो जमा की जा रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और फिर उस रिकॉर्डिंग के कंपैरिजन किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई थीसिस लिखे जाते हैं, स्टडीज की जाती है, या जो है वो स्टोरीज जो है उनको जमा किया जाता है. उन्हें जमा करने के बाद उनको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि कैसे जो है कौन सा वर्जन इसमें ज्यादा ऑथेंटिक है, और फिर उनकी ट्रांसलेशंस की जाती है. जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो अबोरिजिन्स हैं, aboriginal tribes, they have their stories and their language was quite difficult to understand for others. Only a man of their tribe could understand that language. So with the help of those men, the researcher first learned their languages, and then their stories, their songs, their music, and then they made work of transliteration and afterwards translation. ट्रांसलिटरेशन होता है कि एक ही लैंग्वेज के जो मल्टीपल
स्क्रिप्ट्स हैं उनमें लेके आना, और ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. तो फर्स्ट, I say in modern days, oral narrative or oral studies are very much popular. Second are called interdisciplinary studies. Mean literature and psychology, or literature and quantum physics, or even literature and biology. There are many disciplines which have interfaced, and modern researchers, they are studying interdisciplinary, using interdisciplinary approach. Especially after the emergence of cultural study, the major paradigm or umbrella in late 20th and 21st century literature. तो इन 4 के अलावा ये के साथ साथ ये 2 एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगरचे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एस्पेक्ट भी 2 जो 4 कैटेगरीज बताएगी उन्हीं 2 में फॉल करते हैं. यानी एक इंटरप्रेटिव में है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी की जैसे अभी मैंने बात की थी, और जो दूसरा है वो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के पैराडाइम में आता है, यानी कि जो ऑरल नैरेटिव है उसको कलेक्ट करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना. अब इन चारों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर आगे जो है वो बात करते हैं. फर्स्ट टाइप इज बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म. मैं इसकी बात करने से पहले एक थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं ताकि आपको इसको, टेक्स्ट का भी मैंने वर्ड यूज किया था और बताया कि टेक्स्ट is a piece of literature. It can be oral or written. Textual criticism mean criticism based on close reading of text. Textual criticism basically owns the perspective or narrative of the author. It only seeks new interpretation. यानी वो समझता है कि जो अभी तक इंटरप्रिटेशन हो रही है उन्हीं में कुछ नई इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, लेकिन जो टेक्स्ट की फाउंडेशन होती है उसको वो एक्सेप्ट करता है. जो भी रिसर्चर होता है, जो क्रिटिक होता है, जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है. इसके ऑपोजिट डिस्कोर्स. इन डिस्कोर्स and its developed form that is called critical discourse analysis. In discourse and its discourse analysis and later on critical discourse analysis, text is not taken for granted. The text can be challenged. In textual criticism, text is owned, it is not challenged, but it is interpreted. In discourse, the very text can be countered and questioned, and it can expose the hidden motives of developing that text. इसलिए जब टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है तो उसमें टेक्स्ट को ओन करके अगली बात की गई है. अगर डिस्कोर्स क्रिटिसिज्म है तो उसमें टेक्स्ट को भी चैलेंज कर दिया गया. Textual research is concerned with the establishment of an authoritative text, correction of past editions, chronology, authenticity, and attribution. अब ये क्या होते हैं? टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में फोकस ये किया जा रहा है कि जो टेक्स्ट हमने चूज किया है क्या ये करेक्ट वर्जन है कि नहीं. अगर आप इस चीज से अवेयर हो तो डॉक्टर फॉस्टर्स के मोर देन 1 वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें 2 जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर है. शेक्सपियरियन वर्क्स की अगर आप बात करें तो शेक्सपियरियन वर्क्स शेक्सपियर की लाइफ में तो पब्लिश नहीं हुए थे. आफ्टरवर्ड्स जो शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे उन्होंने फोलियो
के जरिए उनको कंपाइल किया, तो वो प्लेस जो हैं हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, आई मिडसमर नाइट्स ड्रीम एटसेट्रा, इन सब के टेक्स्ट जो हैं वो बनाए गए। तो उनकी जो है कुछ शॉर्ट कमिंग्स बताई गई, इनकरेक्शन पॉइंट आउट की गई, एरर्स पॉइंट आउट किए गए, तो फिर उसका रिवाइज्ड वर्जन क्वार्टो की सूरत में आया। और क्वार्टो 1 जो है, मजे की बात यह कि क्वार्टो 1 का नाम ही बैड क्वार्टो पड़ गया। अब क्वार्टो का फंक्शन ये था दैट इट विल इंप्रूव फोलियो। अब फोलियो जो शेक्सपियर के वर्क थे उनको क्वार्टो में इंप्रूव तो किया गया है, लेकिन क्वार्टो 1 आके पता चला कि अभी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए क्वार्टर 2 आया, एंड क्वार्टर 2 इज थॉट मोर रिलायबल। फिर ये था कि डिफरेंट जो सॉरी पब्लिशर्स थे, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर रिसर्चेस जारी रखी कि कौन सा रिलायबल टेक्स्ट हो सकता है। और आज की दुनिया में ये समझा जाता है कि आर्डन शेक्सपियर इज द मोस्ट रिलायबल टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा। तो ये किस लिए हुआ? ये इस तरह से हुआ कि जब टेक्सचुअल जो रिसर्च थी वो कंडक्ट की गई और बताया गया कि कौन सा जो है वो एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, और कंपैरिजन से प्रूव किया गया कि कैसे जो है एविडेंस से प्रूव किया गया कि कौन सा शेक्सपियरियन टेक्स्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल है। इसी तरह आप पढ़ते हैं कि द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हैज 2 वर्जन्स, दो बोथ वर्जन्स वर actually drafted by William Wordsworth himself, and we can see the difference of these two. So which can be more acceptable for a particular interpretation, that is discussed in textual criticism. Secondly, textual criticism has a function. Reader must know that the text he is reading is a genuine one. Critics have been misled by printing errors or faulty text. तो ये कि क्या कोई टेक्स्ट वाकई किसी का है, इसमें एक जो पॉइंट ये भी होता है कि किसने ये टेक्स्ट लिखा। हैमलेट के बारे में तो आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं शेक्सपियर, लेकिन हैमलेट के जो सोर्सेज हैं, जब आप कि हैमलेट की स्टोरी कहाँ से आई थी, तो आप पढ़ते हो कि देयर वाज अ डेनिश लेजेंड, यानी जो डेनमार्क की मैथोलॉजी थी उसके अंदर लेजेंड थे, यानी कि स्टोरीज थी, विच मे बी प्रूव फ्रॉम हिस्ट्री टू बट नॉट एग्जैक्टली। That Danish legend is called Hamlet, and that Danish legend was translated by Saxo Gramont in French language, and then it was translated into English, and then we see in fragments a play that is called Ur Hamlet. अब Ur Hamlet किसने लिखा है? Mostly researchers have proved that it is written by Thomas Tate, but still it is a controversy. तो ये कि उर हैमलेट किसने लिखा है, इसकी अब रिसर्चेस जो की गई हैं, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक रिसर्चेस और टेक्सुअल क्रिटिसिज्म रिसर्चेस। अच्छा, शेक्सपियर के हवाले से ही एक और बात भी एग्जाम्पल के जरिए मैं आपसे शेयर करूं, शायद आप लोगों ने अपने शेक्सपियरियन स्टडीज के कोर्स में भी पढ़ी हो कि शेक्सपियर के प्लेस में एडिशन और डिलीशंस भी किए गए। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ का पोर्टर सीन है, तो उसके हवाले से एक ये आइडिया है कि दैट
जो एसटी कॉलरिज पॉइंट था, ही पॉइंटेड आउट दैट इट्स नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्ले, दैट्स एन इंटरपोलेशन, मीन बाद में किसी ने डाल दी. एंड देयर वाज अनदर critic whose name is Thomas de Quincey. Thomas de Quincey proves that it is not, Porter scene is not interpolation, it is a scene that was actually developed by William Shakespeare, and it has a function of comic relief in the play. किंग लियर के बारे में तो सभी जानते हैं कि नेहम टेट, he was an 18th century scholar, dramatist, who thought that King Lear does not meet classical canon of tragedy, so it should be modified. He modified the story, deleted the character of King France, and added romance of Cordelia and Edgar, and at the end of, and I also added a prologue to the play, and at the end of the play, Cordelia does not die, she is married to Edgar. तो अब ये किसी ने काम दिखा दिया, एक जैसे टेट ने दिखा दिया कि प्ले बना दिया, और ये प्ले परफॉर्म किया जाता था और माना जाता था, लेकिन रिसर्चर्स ने फिर बताया कि ये शेक्सपियर का किंग लियर नहीं है, ये शेक्सपियर के किंग लियर का एक रिवाइज्ड वर्जन है, दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय नेहम टेट. And from Romantic age onwards, Shakespearean King Lear came back. तो इस तरह की रिसर्चेस जो हैं वो सारी की जाती हैं, which are called bibliographic researches and textual criticism. They are also called archival studies, चूंकि इसमें जो लाइब्रेरीज हैं उसमें आर्काइव्स होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में, उनमें मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाते हैं, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडीज की जाती हैं, उनके प्रिंटेड वर्जन्स की स्टडीज की जाती हैं. तो आर्काइव्स होते हैं, इस तरह रेयर बुक्स होती हैं, और रेयर बुक्स बहुत कीमती होती हैं, और वहाँ आमतौर पर उनकी एक्सेस भी बड़ी मुश्किल होती है. तो बहुत बड़ी किसी लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स हो सकती हैं, मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में ये कल्चर किस हद तक है. लाहौर में हमारे वैसे एक रिसर्चर होते थे इधर समनाबाद में, उर्दू के, डॉक्टर एनुल हक फरीद कोटी. तो वो ऐसे बुजुर्ग थे जो इस हवाले से बड़ी कोशिश किया करते थे. बट मोस्टली आवर लाइब्रेरीज आर ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, दे हार्डली हैव कॉर्नर ऑफ रेयर बुक्स. इंडिया की वो पटना लाइब्रेरी, खुदा बख्श पटना लाइब्रेरी, दैट इज वेरी पॉपुलर इन दिस रिगार्ड. और डेफिनेटली जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एवरी यूनिवर्सिटी हैज this type of archival studies and rare books sections. In our museum, I think there is archival studies portion is there. Biographical studies, यानी लिटरेरी रिसर्च की सेकंड टाइप अब बायोग्राफिकल है. इसकी भी मैंने शायद नॉवल के पेपर में आपसे बात की थी कि एक जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसको समझने के लिए आमतौर पर 4 बड़े पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में सामने आए. पहला पर्सपेक्टिव ये था कि किसी टेक्स्ट को समझना हो तो आप कायनात को समझो, जिसकी ये टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसकी ये माइमेटिक करता है, जिसकी ये इमिटेशन करता है. तो ये जो थ्योरी थी ये प्लेटो और अरिस्टोटल से शुरू हुई और आज तक चल रही है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइमेटिक. इसमें फोकस ये होता है कि टेक्स्ट किस यूनिवर्स को, किस कॉस्मो को, किस ट्रूथ को, किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो हियर फोकस इज ऑन वट एवर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू लिटरेचर. सेकेंड थ्योरी वाज what influences it makes on the mind of reader. यानी टेक्स्ट को समझना है तो रीडर पर उसके जो असरात हुए हैं, उसके रवैये में जो तब्दीलियां आई हैं,
उससे समझना चाहिए। और इसके लिए डायडेक्टिक थ्योरी थी, यानी कि उसने पढ़ के क्या सीखा, क्या सबक हासिल किया, मॉरल लेसन। तो शुरू से ये एक मॉरल लेसन शुरू हुआ था पुराने जमानों में, जो पहले तो मैथोलॉजी और रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ था, और 20वीं सेंचुरी में मैथोलॉजी और रिलीजन की बजाय वो पॉलिटिक्स में चला गया। और अब हम आज का जो डायडेक्टिक लिटरेचर पढ़ते हैं, इट हैज different ism like Marxism, feminism, formalism, and a lot of, you can say, movements which representation is there. Third one is called expressive theory, which means a literary text has to express something, and that is the romantic idea of literature, which means the poet knows the exact meaning and he is the authority of his text. He is creator of arts, literature. So biographical researches have one shade that is called romantic, ये जो expressive theory, और दूसरा इसका शेड 20वीं सेंचुरी में जब हिस्टोरिसिज्म पहले सिर्फ कॉन्टेक्स्ट तक यूज किया जाता था, तो बाद में जब न्यू हिस्टोरिसिज्म के जरिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रैक्टिस उसकी स्टडी की गई, तो तब बायोग्राफिकल रिसर्चेस की बहुत वैल्यू बन गई। दिस काइंड ऑफ रिसर्च, दो नेग्लेक्टेड इन इंडिया, इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑथर्स माइंड एंड आर्ट. The task of biographer is really very difficult. All biographers are not fortunate like Boswell. By the way, Boswell was biographer of Samuel Johnson. A biographer has to collect material from different sources, study the author's published works and unpublished writing, interview him frequently if he is alive, meet and collect information from the people close to him, distinguish fact from fiction, and after that present the life story, laying more emphasis on the literary side by correlating the important events of his life and time and his works systematically, chronologically, interestingly. I can say there is a book of prose by Lytton Strachey. He is a great biographer, and he wrote biography of 4 eminent personalities, or 4 famous figures of Victorian age. Title of this book is Eminent Victorian. So Eminent Victorian is an example how to conduct a biographical research. Biographical researches बड़ी अच्छी होती हैं. सैमुअल बैकेट जो हमारे जमाने के सबसे महान राइटर हैं, सैमुअल बैकेट के बायोग्राफी नोएल्सन ने लिखी है, एंड दैट इज रियली अमेजिंग. आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में सैमुअल बैकेट और उसका प्ले क्या है. इसी तरह मैंने चूंकि अपना एमफिल का थीसिस हैरोल्ड पिंटर पे किया था, तो हैरोल्ड पिंटर की बहुत ही जबरदस्त बायोग्राफी लिखी थी माइकल बिलिंगटन ने. तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, और बायोग्राफिकल रिसर्चेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं. थर्ड वन इज थ्योरेटिकल रिसर्च. This kind of research can be compared to basic research in natural and social sciences. Its aim is to propound a theory of literature or modify and improve an already existing one. In past, after Aristotle and Longinus, few scholars and philosophers took literary criticism seriously, but Sidney, Dryden, and Pope cannot be said to be original in their approach. Coleridge, Wordsworth were the first to propound a theory of literature and were followed by Matthew Arnold in 19th century. And in the same period, there was Walter Pater and Oscar Wilde. In 20th century, advances in psychology, anthropology, linguistics, and sociology made people to look at literature from quite different angles. अब हम आप ऐसी स्टडीज करते हैं कि जी इडिपल कॉम्प्लेक्स ऑफ हैमलेट
environmental study of King Lear, new historicist reading of Macbeth, feminist cast in Othello's murdering Desdemona. तो ये वो रिसर्चेस हैं जिसमें मतलब कोई ना कोई कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज हैं और उनके एंगल से पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं. So that is a theoretical research which either uses the existing theories or presents new theories. हमेशा याद रखें कि जो अभी जो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो स्टैब्लिश हो चुकी हैं, जो डोमिनेंट हो चुकी है, वही थ्योरी सब कुछ नहीं है. थ्योरी जो है मैं और आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं. Famous theories are new criticism, which is called New American criticism, a shade of Russian formalism, myth criticism, hermeneutic criticism, psychoanalytic, Marxist criticism, structuralism, and is post-structuralism, with one aspect is deconstruction, feminist criticism, post-colonial theory, new historicism, and cultural materialism. Next type is interpretive studies. यानी लिटरेचर तो है ही शुरू से मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. This kind of research can be compared to applied research in science. Interpretive study analyzes, interprets and evaluates the literary text of an author by applying the principles of a particular thing. It may be a study of an author's style, use of imagery or symbolism, exploration of myth, perception of social reality, expression of the inner soul, development of thought or structure of his text. A literary text is sui generis. It cannot be a replica of the other. I mean, it has its own existence. Researcher has to modify his method and techniques occasionally, and sometimes to revise the theory he has adopted to interpret the text. Interpretive research is closely linked with theoretical research, and most of the students who conduct researches, their research is interpretive. I mean, they just borrow existing theories in Pakistan and they apply on recently published novel or drama or poetry. So there are four significant types of researches. First, bibliographical or textual criticism. Second, biographical. Third, theoretical. And fourth one, interpretive. Two contemporary trends are oral narrative and interdisciplinary approach. तो अभी जो मैंने यहाँ तक बात की है, आप इस पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं. उसके बाद मैं फिर अगले पार्ट पे जाऊंगा कि ये हम रिसर्च करते क्यों हैं, इसका फायदा क्या होता है. यस प्लीज. If any participant has to ask a question about types of researches, literary researches, you can ask. सर इसमें जो आप बात कर रहे थे जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस की, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मलिज्म या जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ये बिल्कुल वही सेम बात कर रहा है जो हमारी आजकल जो लिटरेरी रिसर्च है, तो इसमें वही हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म है या फॉर्मलिज्म हमने या रशियन फॉर्मलिज्म पढ़ा था, बेसिकली तो वो लोग भी टेक्स्ट के ऊपर ही जो है ना वो कर रहे थे सारा फोकस. बिल्कुल. मैंने उसका थोड़ा सा वैसे जिक्र भी किया था कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म क्लोज टेक्स्ट रीडिंग है, और क्लोज टेक्स्ट रीडिंग की जो फ्रेज है वो बेसिकली इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट यानी कि रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू अमेरिकन क्रिटिसिज्म, इनके लिए ही स्टैंड करती है. तो
इनका फोकस ये था कि टेक्स्ट को सिर्फ आप समझें, बाकी सब को छोड़ दें। लेकिन एक जो बात मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि चूंकि एक थ्योरी का पर्पस और एक रिसर्च का पर्पस जो है वो शेयर्ड भी हो सकता है और उससे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो शेयर्ड पर्पस तो इस तरह से है कि बोथ हैव फोकस ऑन टेक्स्ट, लेकिन जो ये टाइप ऑफ रिसर्च होगी इसमें उन चीजों की तरफ जा सकते हैं जो डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट से बहस कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो डेवलप कैसे हुआ। जैसे अगर 5 वर्जन है एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा कब पब्लिश हुआ, उसे पब्लिश करने वाले कौन थे, उनके मोटिव्स क्या थे, किस वजह से जो 4 हैं वो अदर टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही बदनाम किताब है दुनिया में, जो हिटलर ने बहुत उसको चूंकि यूज किया था, दैट इज अस्क्राइब टू नीचेज सिस्टर, यानी जो जर्मन फिलोसफर है नीट्शे, उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको नीचे प्रोनाउंस करते हैं। तो चूंकि हिटलर का एक आइडिया था कि वो एक हेरोइज्म जो है वो अपनी कौम में प्रमोट करना चाहता था, तो नीचियन फिलॉसफी से उसने जो सुपर ईगो या सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करने के लिए एक ऐसी बुक जो है वो यूज की जो कि फ्रेडरिक नीचे जो फिलोसफर है उसकी सिस्टर ने क्लेम किया कि ये मेरे भाई के आइडियाज हैं और इसको जो है मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। वो बुक जो है वो जर्मनी में जो है नाटसी पॉलिटिक्स और नाटसी मूवमेंट के लिए और नाटसिज्म के लिए जो है वो काफी यूज की गई। बाद में उस किताब को जो है वो चैलेंज किया गया और उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि ऐसी कोई, इसमें जो कुछ कहा गया ये नीचे के आइडियाज ही नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। तो अब ये भी स्टडी ऑन टेक्स्ट हो रहा है, लेकिन इस स्टडी ऑन टेक्स्ट में और उस स्टडी ऑन टेक्स्ट में जिसका फोकस ये है कि मेक एन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, इसमें डिफरेंस है। लेकिन ये है कि फॉर्मलिज्म जो है वो टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के करीब है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के करीब है लेकिन बिब्लियोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के करीब नहीं है। जी नेक्स्ट प्लीज। Four objectives of literary research are advancement of knowledge. Advancement of knowledge mean discover that was unknown in the past or rectify which was mistakenly believed in the past. Second, broadening the mind and sharpening critical insight of the researcher, यानी एक क्रिटिकल सोच पैदा करती है। थर्ड, creation of a genuine and intelligent interest in literature. Mean literature is not a delightful activity of reading a text in bed or sofa. That is intelligent interest in literature, which is compared, which is contrasted, which is challenged, and multi-dimensional aspect of literature are explored. Fourth,
is inculcation of the sense that a researcher is a member of a collaborative community. Its purpose is to promote utility of literature. For example, in contemporary age, transgenders and their narrative has got popularity. So if a researcher makes a research on presence of transgender in literature from ancient times to modern and shows how they have been represented and what have been suppressed, that will be interesting. Likewise, children's perspective in literature. हम आज के ज़माने में बच्चों के हकूक, बच्चों की बातें, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्यों बोर होते हैं, अब ये सारे सवाल हैं जिनके हम साइकोलॉजी में भी जवाब दे रहे हैं और आजकल लिटरेचर भी होता है, बच्चों का लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा है. जब हम ग्रीक लिटरेचर पढ़ते हैं, वहां पर बच्चों का नैरेटिव क्या था. जब हम एलिज़ाबेथन लिटरेचर पढ़ते हैं, रिस्टोरेशन लिटरेचर पढ़ते हैं, इवन के रोमांटिक लिटरेचर में जबकि बच्चों को रोमांटिसाइज किया गया था, एवरी चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन एंड एवरी चाइल्ड इज अ प्रीस्ट ऑफ नेचर की बातें की गई थी. उस वक्त क्या वर्जन था. एंड व्हेन 20th century more evidential truth is before us, how we